topic of presentation is epilepsy management. It's a vast topic, and it's evolving topic because every time new drugs are coming out. I will try that you learn something from this presentation. So let's begin with so why to manage epilepsy? The primary goal is to help person with epilepsy to lead full and productive life. For that, you have to eliminate the seizures without producing any side effects. Therefore, the treatment should be tailored to the need of individual population, like women, children, and elderly, those with renal and hepatic failure. So remember that treatment of epilepsy can prevent seizure occurrence, but have no significant impact on underlying disease process. So ये चीज जो है ये हमें पेशेंट्स को और पेशेंट की फैमिली को बहुत क्लियरली और ओपनली शुरू से ही बतानी चाहिए कि जो हम दवाई दे रहे हैं इससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस दवाई से इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये चीज जो है वो डे वन बहुत क्लियरली पेशेंट्स को बतानी चाहिए ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट हो चीज के हवाले से और मेडिकेशन के हवाले से वो क्लियर हो। तो आप जो है जो फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी ये है कि आपने पहले सीजर को आइडेंटिफाई करना है कि व्हिच टाइप ऑफ सीजर इज दिस, वेदर इट्स focal onset, whether it's generalized onset, whether it's combined generalized and focal onset, or whether the onset is unknown. क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट है different seizures की। उसके बाद you have to identify the etiology, whether it's genetic disease, whether it's immune disease, whether it's infectious, whether it's structural, or whether it's idiopathic. और अगर कोई एपिलेप्टिक सिंड्रोम है तो उसका भी हमें डायग्नोसिस करना है। Before starting medication, you need to identify these points. जब कुछ पॉइंट्स जो कि आपने स्टार्ट करने से पहले याद रखनी है कि ऑलवेज यूज मोनोथेरेपी। जब भी आप स्टार्ट करें एक दवाई से शुरू करें। कभी कभार कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं कि सीजर के साथ 2 या 3 दवाइयों के साथ स्टार्ट कर देते, तो ऑलवेज स्टार्ट विद वन एंटी एपिलेप्टिक, और दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सीजर टाइप। फोकल के लिए अलग होगा, जनरलाइज के लिए अलग होगा, और अगर एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स हैं, फॉर एग्जांपल एब्सेंट सीजर है, उसके लिए अलग मेडिकेशन है। So that is most appropriate for seizure type, epilepsy syndrome, and is selfish. तो दोनों चीजें हमें efficacy भी होनी चाहिए और इसी ड्रग की जो है वो सेफ्टी भी होनी चाहिए। So start at an appropriate dose, increase slowly. Consider age and gender, or importantly, you need to consider comorbids too. So what is the target? Target is the seizure control with no side effects. ड्रग लेवल्स हमारे पास कुछ एंटीएपिलेप्टिक्स के होते हैं, लेकिन यूजुअली हम आमतौर पे इनको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो दे आर हेल्पफुल व्हेन द कंप्लायंस इज डाउटफुल। आपको लगता है कि आप डोज बढ़ाते जा रहे हैं और जो पर्सन है, पेशेंट है, उसका रिस्पॉन्स जो है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप कंप्लायंस देखने के लिए आप ड्रग लेवल्स बढ़ा सकते हैं। या फिर कोई ऐसी मेडिसिन साथ चल रही है जिसका ड्रग इंटरेक्शन हो कि आपको लगता हो कि या तो एंजाइम प्रोड्यूसर है तो उसके ड्रग लेवल कम हो जाते हैं, या एंजाइम इन सिचुएशंस में जो है हम लग जाते हैं। अच्छा, हम अब जो एंटीएपिलेप्टिक्स हैं उनको स्विच कब करते हैं या कंबाइन कब करते हैं, तो 2 रीजंस हो सकते हैं। एक या तो फेलियर हो, मतलब एफिकेसी जो है वो पॉइंट हो सकता है, या फिर टॉलरेंस जो है वो इशू हो सकता है, पेशेंट ड्रग टॉलरेट नहीं है। तो अगर देखो अगर वो दूसरी ड्रग की मोनोथेरेपी होगी, आप कंप्लीटली इसको एक ड्रग को बंद करके आप दूसरी ड्रग स्टार्ट करेंगे कर देते हैं, लेकिन इट्स द सेम थिंग। आप बंद करके दूसरी स्टार्ट कर सकते हैं। जब दो मेडिसिन
मेडिसिन से भी नहीं हो रहा है तो then you have to try polytherapy. जब मेडिसिन एंटी एपिलेप्टिक्स की कॉम्बिनेशन होती है तो you have interactions, the use of enzyme inducers with medication. So if you are combining two drugs, then you will anticipate some drug interactions. So use of enzyme inducers with medication with metabolism can be induced. Enzyme inhibition is not a problem. तो अब ये है कि इसमें अब enzyme inducers का मसला ये होता है कि उसके साथ जो दूसरी दवाई चल रही है उसके लेवल्स जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि एक तो कोई अगर कोई मेडिसिन एंजाइम इंड्यूसर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ कोई और जो कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है जिसकी वो यूज़ कर रहे हैं तो आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस ड्रग के लेवल्स लो हो सकते हैं जो दूसरी ड्रग है। अब कॉम्बिनेशन में बेहतर ये होता है कि आप अभी जो है ये टैब्लेट्स यूज करें। फॉर एग्जांपल आप सोडियम चैनल ब्लॉकर को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिलाएं या आप गाबा ड्रग्स को सोडियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिलाएं। दोनों एक ही मोड ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल चूजिंग टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स व्हिच हैव सेम मोड ऑफ एक्शन शुड बी अवॉइडेड। इसमें एक एफिकेसी भी कम हो जाती है इसी ड्रग्स की और आल्सो जो टॉलरेंस है वो भी एक इशू रहता है इस सिचुएशन में। So कौन सी जो कॉमन ड्रग्स हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दैट इंड्यूस मेटाबॉलिज्म फॉर अदर ड्रग्स आर कार्बामेज़ेपिन, फेनिट्रिन एंड फेनोबार्बिटोल। इस ड्रग्स के साथ आप हमेशा जब दूसरी कोई ड्रग ऐड करेंगे तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये एक एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। आपका डोज जो है दूसरी ड्रग का ऑलवेज शुड बी हायर देन द नॉर्मल। इनहिबिट एंटी एपिलेप्टिक दैट इनहिबिट्स जो मोस्ट कॉमन जो इनहिबिट ये है कि ये दोनों एक ही जो है ग्रुप बोथ आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। दूसरा इसमें मसला ये है कि अगर आपने सेम टाइट्रेशन रखी लेमोट्रिजीन की जिस पेशेंट को फॉर एग्जांपल इपिवॉल वेलप्रेट चल रही है और उसमें आपने लेमोट्रिजीन ऐड की और आपने टाइट्रेशन की जो है स्पीड उसका की तो उसमें रिजल्ट ये हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है दैट इज अ नाइटमेयर फॉर पेशेंट एंड फॉर द ट्रीटिंग फिजिशियन के स्टीवन जॉनसन के चांसेस जो है वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं कि दिस हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो बिफोर सिलेक्टिंग एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको नीड टू कंसीडर हैं। सो सीजर टाइप, एपिलेप्सी syndrome, the pharmacokinetic profile of that medicine, interaction with the other medical conditions, efficacy, its expected adverse effects, is that useful as monotherapy, and its cost. ये सारी फैक्टर्स हैं किसी एक एंटीएपिलेप्टिक को स्टार्ट करने से पहले ये आपने सारे देखने हैं। ये जो एंटी एपिलेप्टिक है ये आपको यू वेल नो दैट इसको हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसको काफी लंबे पीरियड के लिए देना होता है। तो मतलब वी एक्सपेक्ट दैट कि जो भी हम एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट कर रहे हैं वो सालों तक चलेगी। इसलिए हमें एक एक चीज को पहले देख के और फिर डिसाइड करना होता है कि विच ड्रग शुड बी स्टार्टेड। तो ये कुछ ड्रग्स हैं। आई वोंट गो इनटू डिटेल कि जो पार्शियल के लिए चॉइस हैं और कुछ जो ड्रग्स हैं जो जनरलाइज के लिए। तो कार्बामेज़ेपिन is at top in partial onset seizures. Phenytoin, phenobarbital, oxcarbamazepine, topiramate, lacosamide, levetiracetam, gabapentin, and lamotrigine. These all can be used in focal onset epilepsies. And for the absence epilepsy, valproate and lamotrigine, and third is the ethosuximide are the drug of choices. तो इसके अलावा जो मायोक्लोनिक है उसमें ये इम्पोर्टेंट है कुछ दवाइयाँ मायोक्लोनिक सीजर्स को वर्स करती हैं। तो ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द मायोक्लोनिक सीजर्स इज वेलप्रोएट, लेविट्रासिटैम, क्लोनाज़ेपैम एंड लेमोट्रिजीन। बाकी जो जनरलाइज्ड मायोक्लोनिक है उसमें वेलप्रोएट एसिड है, लेविट्रासिटैम है, लेमोट्रिजीन है, फेनिट्रिन है और कार्बामेज़ेपिन है। तो इसमें से कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो फोकल में भी यूज हो रही हैं और जो कि जनरलाइज में भी यूज हो रही हैं। तो उनको हम यूजुअली
call them as broad spectrum antiepileptics, और जो कि सिर्फ फोकल के लिए हैं और जनरलाइज के लिए हैं, तो वो फिर स्पेसिफिक ड्रग्स हो जाती है। फिर सिर्फ 2 ड्रग्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा मैं इस पे डिस्कस करूंगा इस प्रेजेंटेशन में। तो लेविट्रासिटैम जो कि आजकल वेरी कॉमनली ऑलमोस्ट हम जब भी इनपेशेंट स्पेशली देखते हैं तो हमारे पेशेंट देखने से पहले ही ये मिल चुकी होती है इस पेशेंट्स को, क्योंकि इस एक तो इजीली आईवी फॉर्म में इसको दे सकते हैं, और दूसरा ये कि इनका ड्रग इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम है बाकी मेडिसिन से। देयर इज नो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, तो कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है। इसके अलावा इट हैज वेरी लो प्रोटीन बाइंडिंग, तो कोई ज़्यादा हमें लोडिंग डोज की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इट्स इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सीजर्स, सो इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीएपिलेप्टिक। तो ये इस आजकल जो है इंटरनेशनली भी इट्स नॉट एफडीए अप्रूव्ड, लेकिन यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन जो है वहाँ पे ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। नाउ द रीसेंट इज ब्रेविटासिटैम, सो इट्स हैज सिमिलर मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन ये है कि इट्स binds with the protein and releases a neurotransmitter जो कि न्यूरॉन की फोल्ड हायर affinity that binding affinity, so it's probably more potent than the levitation. So again कोई interaction नहीं है, it's slightly more interaction clearance enhanced by enzyme inducers. It's regular, so जो हम प्रोफाइल देख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि it's little better than the its previous levitation. These are some lesser used anti-epileptics, इनके बारे में और ज़्यादा नहीं देखते हैं। अच्छा, अब रिसेंटली अप्रूव, ये इतने रिसेंट नहीं है, एक 2 मेडिसिन हैं जो कि अप्रूव हुई हैं। वन इज सिनोबेमेड, that was approved in 2019 for focal onset epilepsies in adults, and exceptionally used as an adjuvant therapy, और उन पेशेंट्स में जिनमें स्पेशली ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज होती हैं उनको हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। ड्रग इंटरेक्शन विद एंजाइम इंड्यूसर्स एंड स्टार्टिंग डोज 12.5 to 100 milligram per day. The second is fenfluramine. It's actually appetite suppressant and now is used for epilepsy. There is no drug interaction. Specifically used in Dravet syndrome, and the dose is 0.1 milligram per kilogram twice daily. ये 2 जो recently approved drugs हैं by the FDA, और recent advancement में ये है कि लेक्टोसमाइड जो है वो has got the approval for the generalized tonic-clonic seizures. अब एक मेन जो है सिचुएशन जो हम कॉमनली फेस करते हैं, यंग फीमेल्स होती हैं और चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल होती हैं, तो उनमें हम कौन सी एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट करें, या अगर कोई पेशेंट किसी एंटी एपिलेप्टिक पे है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में हम किस तरह से डील करें। तो इसमें यह है कि प्री कंसेप्शन इंफॉर्मेशन शुड बी ऑफर्ड टू ऑल फीमेल पेशेंट्स को कंप्लीटली, कोई भी young female patient है, whether she is married or not, you should these all female childbearing age, since major malformations occurred at early stage of pregnancy, often before the woman knows she is pregnant. तो ये पता चलने से पहले ही जो है वो चीजें जो है वो गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसीलिए आप एग्जैक्टली जब भी यंग फीमेल चाइल्ड बेयरिंग एज, whether she is married or not, you should counsel about the medicines, और बेस्ट जो है वो मेडिसिन, सेफ मेडिसिन यूज करने का टाइम जो है वो बिफोर कंसेप्शन। The use of phenytoin, valproate, carbamazepine, lamotrigine, and phenobarbital has been associated with an increased risk of major malformations. तो ये सारी ड्रग्स जो है वो टेराटोजेनिक है and minor morphological anomalies. So 3% with carbamazepine और lamotrigine कम से कम इनके साथ है, 7% with
valproate and or more ADs. It is not known if Vegabet, oxcarbamazepine, pregabalin, and digabin are associated with a risk of fetal abnormalities in humans. इसमें अगर इस डेटा को देखें सेफेस्ट जो है और इस पे सबसे ज्यादा लिटरेचर वो है कार्बामेजेपिन दैट इज सेफेस्ट एंड विद कार्बामेजेपिन लेमोट्रिजीन जो है वो जो है इसके इक्वली सेफ है. Women with epilepsy who are planning a pregnancy should take folic acid 1 milligram per day in pre-conception period and throughout the pregnancy. सप्लीमेंट कहते हैं कि फॉलिक एसिड हम ऐड कर दें जितनी भी पेशेंट्स जो हैं जो कि चाइल्ड बेबी and vitamin K should be used in last month of pregnancy in women on enzyme inducing anti-epileptic. Women who are on hormonal forms of contraception, they should be informed about the enzyme inducing capacity. इनके जो if the patient is on phenytoin, barbiturate, carbamazepine, oxcarbamazepine, ये सारी medicines जो हैं वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को की एफिकेसी को डिक्रीज कर देते हैं. तो देयर इज चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो ये जो है दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. व्हाट इज द फर्स्ट एड अगर कोई आपने कोई देख रहे हैं पेशेंट, व्हाट टू डू व्हेन समवन सीज इन फ्रंट ऑफ यू. आंसर अब आप पे है. आई थिंक वी कैन नॉट डू मच. अगर ये है कि सीजर जो है if it's prolonged more than 5 minutes then we have to और हमें otherwise जो है हम during seizure हम ज़्यादा कुछ उस पे we cannot do much more if a patient is seizing in front of you. तो drug resistant epilepsy किसको कहते हैं? Epilepsy is considered drug resistant if at least 2 appropriate chosen and used anti-seizure medication that fail to control seizure. आपने अलग अलग यूज किए या आपने कॉम्बिनेशन में यूज किए. अगर 2 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बावजूद जो है सीजर्स कंट्रोल नहीं होते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी. इट्स वेरी कॉमन अप टू 40%. और the reasons could be inadequate sleep, intake of stimulants like alcohol, strict non-compliance to the medication. These patients should be asked for to maintain the diaries for each episode, like ऐसे पेशेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए. तो क्योंकि कभी कभार सीजर्स एंड साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक अटैक्स साथ चल रहे होते हैं तो इसको भी हमें रूल आउट करना होता है कि whether the episode is true seizure or it's a false seizure. तो इस रीजन देखने के लिए थोड़ा सा एपिलेप्टिक सर्जरीज के बारे में ये है कि देयर आर कॉमनली द ऑप्शंस इंक्लूड रीजनेक्टोमी. रीजनेक्टोमी का मतलब ये है कि अगर हमें किसी पेशेंट में एपिलेप्टिक फोकाई मिल जाता है और वो एक्सेसिबल है टू द सर्जरी तो हम वो बेस्ट तरीका तो ये है कि हम उस रीजन को रिमूव कर दें ताकि पेशेंट जो है वो सीजर फ्री हो सके. बाकी जो है कैलोसॉटमी और हेमीस्फेरेक्टोमी ये जो है बेसिक जिसमें अनकंट्रोल्ड सीजर. तो कैलोसॉटमी जो है वो बेसिकली जनरलाइज्ड टॉनिक सीजर जिनके अनकंट्रोल्ड होते हैं उनमें यूज होती है ताकि एटलीस्ट जो है जीटीसीज जो है वो फ्रीक्वेंसी जो वो कम हो सके. हेमिस्फेरेक्टोमी अमूमन ऑटोइम्यून रेस्पोंसिंग डिजीज है उसमें यूज हो सकती है. The other options are vagal nerve stimulation or responsive neurostimulation device. The most common जो है mesial temporal sclerosis. उसमें mesial temporal lobe epilepsy that is focal structural pathology like low grade gliomas, cavernous malformations, limited in generalized epilepsy. Generalized epilepsy में तो उतना कोई रोल नहीं है. Otherwise mesial temporal lobe epilepsy में बहुत अच्छा रोल है सीजर्स का सर्जरी का. और लो ग्रेड ग्लायोमास जो इजीली एक्सेसिबल हो और कैवर्नस malformation सरफेस में भी जो है
efficacy of ketogenic diet was documented and it's all well documented. ये उन पेशेंट्स में यूज होती है जो कि स्पेशली ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, काफी सारी दवाएं आप यूज कर चुके हैं बच्चों में, एडोलेसेंट्स में, और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसमें हम ये एक ऑप्शन होता है कि आप कीटोजेनिक डाइट जो है वो एडवाइस करें. कीटोजेनिक डाइट बेसिकली इट्स हाई फैट एंड लो शुगर डाइट. अब ये है कि अब कब व्हेन टू स्टॉप ईटिंग, हमने स्टार्ट तो कर दिए, अब बंद कर कब करनी है दवाइयाँ. इसमें जो बेसिक है वो यही है कि सीजर फ्री फॉर 2 years. तो कम से कम जो है वो हम ये पेशेंट को मेडिसिन जो है वो 2 years तक देते हैं, और 2 years फ्रॉम द लास्ट सीजर. ठीक है, उसमें अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसके 2 साल तक सीजर्स नहीं हुए, उसमें फिर हम ग्रेजुअल टेपर ऑफ जो है वो एंटीइपिलेप्टिक्स का कर सकते हैं. कंट्रोल अचीव इजीली ऑन वन ड्रग एट लो डोज. नो प्रीवियस अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट विथड्रॉल. कुछ पेशेंट होते हैं जो कि सालों साल एंटीइपिलेप्टिक्स ले रहे होते हैं और उनको कोई सीजर, आखिरी सीजर याद नहीं होता है कि कब हुआ है, तो उसमें भी हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हम स्लोली जो है टेपर ऑफ करें. इसके लिए ज़रूरी है कि 2 साल जो है वो कम से कम पीरियड गुजर चुका हो और नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हो और ईजी भी नॉर्मल हो. प्राइमरली जनरलाइज सीजर्स एक्सेप्ट जे. प्राइमरीली जनरलाइज सीजर्स जो है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप एपिलेप्टिक्स को रोक सकें एज कम्पेयर टू फोकल सीजर्स. फोकल में लेस चांसेस होते हैं कि सीजर. सिंपल कुछ क्वेश्चंस हैं. Diagnosis is idiopathic generalized epilepsy and treatment is Tagorol 200 milligram twice a day. So this is a wrong answer. Idiopathic के लिए हमें obviously वो drug use करनी चाहिए जो कि generalized के लिए. Tagorol is for focal epilepsy है पेशेंट को और ट्रीटमेंट दे रहे हैं Tagorol. Generalized epilepsy है तो Tagorol 200 milligram twice daily और Epival 500 milligram twice daily. So generalized epilepsy है, so the answer is Epival 500. Case 3 is post-noxic myoclonus. So treatment Tagorol 200 mg twice daily. So I think this is not a good choice. Tagorol worsens the myoclonic seizures. और इसके लिए हमें वो मेडिसिन यूज करनी चाहिए जो हमने पहले पढ़ी, मेडिसिन मायोक्लोनस के लिए इफेक्टिव है. So here I end my presentation. I am available for any question, any query you have. थोड़ा सा क्विक थी क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, तो मैंने चीजें बहुत ज़्यादा कवर करनी थी. So any question? Sir, thank you so much, sir, for such nice presentation. I hope, just like me, all doctors enjoyed and learned from this session. Very brief session, sir. Sir, we have questions in chat box. First one question is, how can I stop the seizures? From Suhail Qureshi, Medical Ward, Lumps, Hyderabad. Recetam is failed, considering as first line, and ASM considering treating the ICU. Sir, second question is, sir, what is the perfect combination when levetiracetam is failed, considering as a first line, ASM considering treating generalized seizures? अच्छा, मैं खुद रीड करके और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको इनका आंसर करता हूँ. व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन व्हेन लेवेटिरासेtam इज फेल्ड कंसीडरिंग एज फर्स्ट लाइन. तो आप कोई भी ऑप्शन भी ये है कि आप किसी और, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो है लेवेटिरासेtam, तो आप कोई ऐसी ड्रग चूज करें जो कि डिफरेंट ग्रुप से हो. फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल ब्लॉकर आप यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आपको ये देखना है, परफेक्ट ड्रग तो वही होगी कि आप इंडिविजुअल जो है पेशेंट को देखेंगे, इसका जेंडर क्या है, उसके कोमॉर्बिड्स क्या हैं, उसके जो है दूसरी मेडिसिन जो है वो कौन सी चल रही हैं, और उसके साथ आप ये जो है जहन में रखें कि आपको इट्स बेटर टू चूज एंड ड्रग विद डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन. तो आई होप मिस्टर सैयद यासिर, मैंने आपको आपके आंसर को आपके क्वेश्चन को आंसर किया है.
Second question is, can levetiracetam be prescribed with levetiracetam? I think no. दोनों का mode of action is same. आप simply levetiracetam को switch कर दें from levetiracetam to levetiracetam. इसमें दोनों साथ जो है वो बिल्कुल नहीं चलाएं. Levetiracetam and levetiracetam both have same mechanism exactly. तो दोनों को हम एक साथ नहीं देते हैं. दोनों का एक ही function है और एक ही mode of action है और एक ही सारी प्रोफाइल है. तो you will simply switch from levetiracetam to levetiracetam. Please repeat the detail. इसमें basically जो है ये levetiracetam एक प्रोटीन को बाउंड करती है और वो प्रोटीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को जो है वो इनहिबिट करता है और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बेसिकली एक्साइटेटरी होते हैं. तो exact mode of action levetiracetam that's not known, but this is like those neurotransmitters की release को inhibit करती है ये ड्रग और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं these are active in neuro excitation process of the nervous system जो कि and seizure कराता है. तो epiol and levetiracetam is a good combination. दोनों की जो है mode of action different है और safety profile different है. तो this is a very good combination. अगर आप generalized epilepsy में epiol और levetiracetam को combine करें seizures जो है वो control नहीं होते हैं. Can we use vegetarian? I think you are asking about Vigabatrin in combination with levetiracetam not work alone. Vigabatrin जो है वो specially use होती है spasm. Obviously ये जो है मतलब ये कि already कोई चल रही हो उसके साथ आप कोई और मेडिसिन ऐड करें तो इट्स अगेन वेगाबैट्रिन. अगर आप मुझे इसमें आपका मैसेज है ना वेजी कुछ मतलब मिस टाइपिंग हुई है. तो वेगाबैट्रिन आप कह रहे हैं तो इट्स यू कैन यूज वेगाबैट्रिन विद लेवेटिराcetam. यस, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. Thank you so much, sir. Bundle of thanks for and very interesting question answer session. I learned a lot. And bundle of thanks for your time, sir. You are so busy person. और patiently listening to me, all of you, और आपने यहाँ पे ज्वाइन किया. I'm thankful to all of you and especially to the Genix Pharma जिन्होंने ये they gave me the opportunity. Thank you so much, sir. Thank you. Allah Hafiz.